ये सिखाया हमें इस ट्रिप ने कि रुक जाओ और बस सांस लो, अपने आसपास देखो। जिंदगी भर की भाग दौड़ में हम यही भूल जाते कि हम जिंदगी जी क्यों रहे थे, ताकि हम वो सारी चीज़ें कर पाएं जो हमें अच्छी लगती हैं। नहीं, हमारी ये बाली की ट्रिप ऐसी एक कहानी थी जहाँ हम इस एडवेंचरस जर्नी पर गए और हमने इस आइलैंड को ट्रैवलर्स की तरह एक्सप्लोर करने की कोशिश की, ना कि टूरिस्ट की तरह। और बस ऐसे ही ये ट्रिप एक ऐसी कहानी बन गई जिसकी गूंज हमें सालों साल सुनाई देती रहेगी। Everyone say Bhagwan. We're ready for Bali with a lot of go. ulcers. A lot of what? A lot of ulcers and people. Less people, Good lot of comparison. ulcers. Good comparison. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kaustu. Happy birthday to you. Bhagwan, we got the bag in 1 second. In 1 second, and well, they took us on the side and separately did our immigration. Within 5 minutes, everyone is still waiting for like an hour. They took us on the side and did our immigration. तो पहले दिन हम जा रहे थे तनाहा टेम्पल। हम रह रहे थे कूटा और सेमिनियाक के बीच, जो कि यहाँ की पॉपुलर डेस्टिनेशंस है टू एक्सपीरियंस द सिटी लाइफ ऑफ बाली। टेम्पल था सिटी के नॉर्थ में। यह हमारा पहला ही दिन था, सो हम लोग काफ़ी लेट उठ गए, बट वी वर ऑन अ वे। It's that coffee, shit coffee. What? It's the coffee from the poop of that animal. Food coffee. Because that's famous, bro. It's done. Oh. Yeah. Hey, You wanna try, bro?
We were amazed at the sight of this temple and its surroundings. Now we had to go to the temple, but temple पहुंचने का बस एक ही रास्ता था और वो था पानी से. इनिशियली हमारा प्लान था यहाँ से साउथ उलवाटू टेम्पल जाना, जो करीब 2 घंटे की दूरी पर था, पर सनसेट होने वाला था और हमारे पास 2 घंटे नहीं थे, तो हमने बस मैप पर पास में एक जगह देखी और वहाँ पहुँच गए. It was one peaceful place. So that was our first day, but the best was yet to come. अब हम जा रहे थे नूसा पेनीडा आइलैंड स्पीड बोट से. ये छोटा सा आइलैंड बाली के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है और यहाँ जाने के लिए आपको आना होगा सानूर हार्बर. हमारी टिकट्स हमारे होटल ने बुक करके दी थी अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन. यू कैन चेक आउट द लिंक्स टू ऑल द होटल्स वी बुक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. It's a bumpy 1-hour ride, but a beautiful one with the view of Mount Agung. यहाँ मल्टीपल हार्बर्स है और हम वहाँ उतरे जहाँ से हमारा होटल सबसे नज़दीक था. ये था हमारा होटल with the sea view along with the mountains in the back. What more can you ask? After a little rest, we had to be on our way to the first location of Nusa Penida. Kelingking बीच. ये जगह हम सब ने फोटोज में देखी है और मुझे नहीं लगता इसे डिस्क्राइब करने के लिए we need any words.
बीच पर जाने के लिए यू हैव टू डू अ रियली स्टीप ट्रैक. All that whilst these monkeys try to grab your food or water bottles, but you stand your ground and it will be all right. By the end of the trek, we were really tired. Everyone had already gone up and it was sunset, but it was so worth it. We are going to do this. Hell yeah. Yeah. अगले दिन हम जल्दी में थे. आज हम जा रहे थे स्नॉर्कलिंग. हमने क्लिक से टूर बुक किया था पर हम लेट हो चुके थे और हमारा उनके साथ कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था. हमने आसपास पूछा और किसी तरह वहाँ पहुँच गए पर Seems like we missed the boat for 5 minutes as usual. We're late, but we will see if they can figure out something for us. Here's Bhagwan trying to make the magic happen with the guy. So him alone will manage. He will get us on the boat. and just like that, with Bhagwan, miracles happened. We were assigned to another boat. Bhagwan! We covered 3 spots in about 3 hours. And it was a delightful experience swimming in the Bali waters. Without wasting any more time, we were off to catch the sunset from another good place. Instead of turning right, we will turn. Well, now we're just gonna go straight, and there's like a bar. Okay, we're going behind now. Huh? Going back now. Yes. Yeah, because there's nothing there. Nothing But there. not back. But just when we turn right, Ah, if we turn left, there was a spot. नेक्स्ट डे हम सुबह जल्दी उठ गए क्योंकि दोपहर 4 बजे हमारी स्पीड बोट बुक थी और उससे पहले हमें एक और जगह कवर करनी थी. This was supposed to be one of the most beautiful beaches in the world, but by this time into the trip, we were already ecstatic and completely immersed in gratitude for being able to witness the beauty of this island. how fuck is this place? पर ये जगह, which is the Diamond Beach, is on another level of beautiful.
हमारे पास 2 और घंटे थे बिफोर वी हेड बैक, सो ऑल वी हैड टू डू हियर वाज चिल। यहाँ आए हमें बस 3 दिन हुए थे, बट वी वर इन लव विद दिस प्लेस एंड ऑल वी विश्ड वाज फॉर द टाइम टू फ्रीज। Stay tuned for the next episode as we go to Ubud, which is in the heart of Bali. Regarded as one of the top destinations of Bali, we will be exploring the rice fields and the volcanoes of Bali. See you soon.